you so much for giving us this exclusive interview. Once again, the first to Network 18. I would like to begin my first question, and I'd like to frame it in the context of the last 3 years. In the September of 2019, you did a deep corporate tax cut, setting the agenda for growth, if I may. The same year, you delivered a growth-oriented budget. You repeated a very good growth-oriented budget even last year. This year, everyone was expecting you to deliver a populist budget ahead of the 5 states going into election. What was going on in your mind this year when you were framing this budget? Thanks for giving me this opportunity to explain a bit more about the budget. I think in the mind of the Prime Minister, there was never this doubt that this budget, drawing from certain policy prescriptions that we had laid out in the last, for an economy which is coming out of the pandemic and showing very good positive revival signs, we should unhesitatingly give more help and stimulus that is required so that the revival is sustainable and the revival is strong. And therefore, there was no doubt in our minds from the very initial stages of working on this budget that public investment in infrastructure, that is the capital expenditure for the government, should be kept up. Even last year, we had given a good solid increase in the capital expenditure of the government between 2021 and 21-22. Now this year, therefore, we wanted to continue that momentum and also take as much as it is required to help the states to also move forward with their infrastructure spending. So from the beginning, I think the clarity in the mind of the Prime Minister was growth. Growth has to be ensured, growth has to be sustained, and we have to lead it, because only by public expenditure on infrastructure building, we believe that the virtuous cycle will happen, and also there will be a crowding in effect for the private investments to come in. So there was never a doubt other than this. The elections were not weighing on your mind? No, actually we thought if the economy does well and if growth has attained that kind of a momentum, the multiplier effect, which because when you spend on infrastructure and when you do capital expenditure, for every rupee that you spend, approximately 2.95 is what you would get as a multiplier, as opposed to when you're giving money through revenue expenditure, you get less than 1 rupee for every rupee that you spend, something in the range of 0.95 or something. And therefore we thought it was important to have maximum multiplier effect, and that would have enough ripple in the economy whereby the well-being of the citizens will be attended to. So if that is happening, why would any other consideration come in, even with the elections on? Elections come and go, but the economy, particularly at this time, at this juncture, requires that strong support. Nirmala ji, if you look at India, it is one of the bright spots in the global economy. That's Today, right. Our economy is expected to grow at 8.5% next year. The same number for China is 4.8%, Brazil 1.6%, Indonesia 5.6%. Do you think that an 8% plus kind of growth is sustainable over the next few years? If things go the way they are going now, in that gradually all sectors come up and are on their toes. And why do I say this? I recognize that even now the hospitality and contact intensive sectors are still requiring support, and that's been provided for in the budget. So our understanding is if even those sectors
revive as much as they would like to, and with support from government and with support from the systems, banking and others, yes, that is achievable. You know, this time, one big headline of your budget has been this big capex boost. You also referred to it just a little while ago. Allocation of 7.5 lakh crore. You know, that's a big number, up 35% from last year. Do you think that this will fire up private investments? If that happens, you know, it could change the face of the economy. Are you confident of that? I'm hopeful of that because you see, I'm looking at it from slightly different stages and also environments. In 2019, for instance, when we brought in the reduction in the corporate tax and brought it down to such level which was globally probably the lowest or probably one of the few lowest rates, we that year were sort of reminded saying your corporate tax revenues have gone down, you saw it's not going to help and so on. But we had this great faith, and Prime Minister's interaction with the industry also was very reassuring because people felt that that was a very positive, constructive steps. And what did it do? Actually, many of the industries, many of the big companies who actually generate wealth and create also jobs, so you saw them per media reports leveraging it, probably cleaning up their debts and so on. But that providentially has come of help during the pandemic time, that today you find many of them moving into areas of expanding their capacity. Mergers are happening, acquisitions are happening. You see that companies are out there to be able to expand their capacities, looking at the buoyant Indian market. And also exports are growing, which means export potential is also there for private sector investments to see the opportunity available and expansion, and also newer capacities are definitely going to come in. The last point on that is you also see, in spite of all the naysayers, FDI into this country, in spite of all the speculation about other central banking authorities taking different call, whether it is the Fed or anywhere else, FDIs are still coming into this country in a big way. They are not FPIs. Yes. FDIs come in to be invested in, to be on the boards of companies and then take a call. And therefore, I think companies now are happy to be partnering with a lot of FDIs which are coming in and increasing their manufacturing capacities, servicing capacities, not just to serve Indian market, but also be able to access global markets. And our PLI scheme also indicates that. Yes. You know, Nirmala ji, if you look at the actual spending from capex allocation so far in the first 8 months of this year, it is at 50% of the allocation of 5.5 lakh crore. Now you increase that to 7.5 lakh crore next year. How confident are you that the spending will keep pace with the allocation? First of all, this year has been, yes, we had made an allocation till December, you are right, 65 to 68% has been utilized by the departments for spending on public infrastructure. But after the budget was announced, let's not forget that we had Omicron, the second wave, not even Omicron, second wave in April. And although we came out of it, thank God for that, although we came out of it quickly, it also staggered that first quarter's expenditure into the second, into the third, and so on. So reaching 68 in spite of the first quarter April and a bit of May going in because of the second wave and the psychological imprint it left on people, for us to catch up with the intended public expenditure did have a lag effect. So I would think that shouldn't be the case this coming year, now that Omicron also is showing signs of withdrawing. I don't want to say it's gone away, we'll have to be careful, but still.
Nirmala ji, you've addressed the supply side of the issue. I come to now the demand side. The big issue is how do we really revive demand? So you've got your large capital expenditure program chalked out. Could you have considered cutting taxes to put more money into the hands of the consumer? There are ways in which demand creation can happen. In our country, where the taxpayers' number and also the taxpayers' profile is seen, then you also realize that it is possible to provide stability in tax regime, predictability in tax regime, and that I would think is a very important factor at a time like this. You don't want to bring in elements of uncertainty, and as a result of which some sections feeling, oh, all right, I've got some relief, but some other sections feeling that hadn't come to us. And probably this would have a bearing on many others. Any exemption given is also just not for those who desperately need it, but by law would be applicable for others who probably don't need it so much, but because the system and the framing is such that it'll benefit everybody. Yes. So that is one point. And second, if you're looking at tax stability, if you're looking at predictability and making sure that you have not increased anybody's burden, you're at least making sure that people who have planned their monies can be sure that that is remaining unaffected. Right. So we in this budget placed a lot of emphasis on stability and predictability. I'm no cricket watcher, but I would definitely say this from my outsider's understanding. Particularly in a T20 match, it will be the opening batsman can have the liberty to smash hit and do a lot of good sort of risk-taking batting, and probably the end overs the fellows would have to catch up doing as much as they can because they'll have to meet the target and the gap which has to be filled. But there is a sweat toil happening which is in between the two. Yeah. You can probably take that situation. I must say your cricket understanding is quite decent. Thank you. No, I think predictability, stability, I would even say continuity. I think that's been the hallmark of your last three budgets, as I have closely seen it. Right. Let me come to something that is, a niggling issue, a global headache in some senses, inflation. Look at the US, for instance. Our consumer inflation has obviously stayed in the 4 to 6% range. But, if that were to really go up in the coming years, do you think that could throw some kind of a spanner in the works? I think globally all economies are worried about inflation. And that's not to say, okay, so what? Does it affect your planning or not? It does affect my planning. I'm only trying to say this inflation, particularly because of certain global factors of metals being very highly priced, energy, at least the fossil fuel being very expensive, the production being cut down, the cartel or cartelization of those who are fixing the prices, or all that is having a bearing on all over the world and certainly on us as well. Yes. And we also have realized that we are at a stage where we are making a transition towards climate friendly steps, yes, moving out of fossil fuel. And at this time we probably even, like many countries, want to look at gas coming in, natural gas coming in to replace many of what was dependent on fossil fuel. But at this time, with international natural gas price also going up, you're facing a situation where you're planning for something at a transitional stage, and that also is now going to be dearer. And as a result, your planning is also getting adjusted as we go along to look at giving more incentives for electric vehicles and so on. So the long and short of it is, yes, we are conscious of inflation, the global price going up on essential goods, particularly those which are important for industry. And within India, essential goods, for instance,
are pulses and our edible oils, both of which still depend on a lot of imports. Our capacities are still not growing in oilseed production. We are not producing enough pulses for this country as much as we consume. So we will have to get them from outside. And therefore simultaneously increasing, we have given some incentives for, or we have a scheme through which oilseed production will be encouraged, but still even then we have to keep importing oil. Yes. Crude edible oil or refined edible oil. And the countries which do export this do understand that India is a very big consumer. Yeah. I'll come to oil in just a moment. Just before that, the Fed Reserve has indicated raising interest rates this year. The US Fed Reserve's balance sheet is also likely to shrink as a part of quantitative tightening. All this will dramatically impact, sharply reduce global liquidity. What will be the impact on the Indian economy and our markets? Well, I think if I can be fair in saying, since last 6 months, the Reserve Bank has been very keenly watching, and also the fora, the international fora in which both the Reserve Bank and Ministry of Finance meet with the international leaders, whether it is the G20, whether it is the World Bank, IMF meet. We've all been closely in discussion with countries to understand how this is going to play out. The lessons learned from the taper tantrum of 2000, post-2009 crisis, taper tantrum of 12-13, the lessons learned out of that are very fresh in our mind. So we are being sure that none of that will happen. We wouldn't leave all doors open like the way it was done earlier. We are watchful, and we should make all necessary steps progressively leading towards it so that our economy remains protected to that extent. तो ये पूरा इंटरव्यू CNN न्यूज़ 18, CNBC TV 18 और News18.com मनी कंट्रोल पर आप देख सकते हैं। खबरें लगातार जारी हैं। बेतिया के नरकटियागंज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब तो इन अपराधियों ने डॉक्टरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खुलेआम डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। शिकारपुर के शिवगंज मोहल्ले से भी डॉक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ नकाबपोश अपराधी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं। जैसे ही डॉक्टर पर इन नकाबपोशों की नजर जाती है, उसे वो पीटने लगते हैं। डॉक्टर को बचाने पहुंचे क्लिनिक के 2 कर्मचारियों की भी जमकर पिटाई की गई है। वारदात की ये सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि रंगदारी वसूली को लेकर उन पर हमला किया गया, जिसमें 3 नामजद तो 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि इलाज के दौरान पैसों के विवाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार मारपीट की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि बुजुर्ग हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कन्हौली में तो बुजुर्ग मानो अपराधी बन बैठे हैं। पूर्व सरपंच होने के बावजूद गुंडई पर उतर आए हैं। बेबस महिला पर रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। अकेली महिला को अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। अब जब समाज का पूर्व सरपंच ही गुंडई पर उतर आया हो, तो समाज के लोग भी दुब के रहे। किसी ने लाठी डंडों से पीट रही इस अकेली महिला को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जमीन विवाद की जंग में पूर्व सरपंच शफीक अकेली महिला को पीटता रहा और समाज तमाशबीन बनकर गुंडे की इस तस्वीर को देखती रही। सोशल मीडिया पर महिला को पीटने का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। आरोपी पूर्व सरपंच कन्हौली थाना क्षेत्र के कचौर गांव का बताया जा रहा है। वहीं पूर्व सरपंच की पिटाई से महिला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर में एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
युवक की पिटाई दरअसल प्रेम संबंधों को लेकर की गई है। आरोप है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था, जिसे रंगे हाथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने आव देखा न ताव, पहले युवक को पोल से बांधा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। साथ ही साथ पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। बेतिया के नरकटियागंज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब तो इन अपराधियों ने डॉक्टरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खुलेआम डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। शिकारपुर के शिवगंज मोहल्ले से भी डॉक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ नकाबपोश अपराधी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं। जैसे ही डॉक्टर पर इन नकाबपोशों की नजर जाती है, उसे वो पीटने लगते हैं। डॉक्टर को बचाने पहुंचे क्लिनिक के 2 कर्मचारियों की भी जमकर पिटाई की गई है। वारदात की ये सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि रंगदारी वसूली को लेकर उन पर हमला किया गया, जिसमें 3 नामजद तो 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि इलाज के दौरान पैसों के विवाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार मारपीट की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि बुजुर्ग हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कन्हौली में तो बुजुर्ग मानो अपराधी बन बैठे हैं। पूर्व सरपंच होने के बावजूद गुंडई पर उतर आए हैं। बेबस महिला पर रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। अकेली महिला को अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। अब जब समाज का पूर्व सरपंच ही गुंडई पर उतर आया हो, तो समाज के लोग भी दुब के रहे। किसी ने लाठी डंडों से पीट रही इस अकेली महिला को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जमीन विवाद की जंग में पूर्व सरपंच सफीक अकेली महिला को पीटता रहा और समाज तमाशबीन बनकर गुंडे की इस तस्वीर को देखती रही। सोशल मीडिया पर महिला को पीटने का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। आरोपी पूर्व सरपंच कन्हौली थाना क्षेत्र के कचौर गांव का बताया जा रहा है। वहीं पूर्व सरपंच तो यह पूरा इंटरव्यू हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन बड़ी बातें क्या हैं इस पूरे इंटरव्यू की वो जरूर हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बजट के बारे में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा इस खास इंटरव्यू में। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। महामारी से उबरने वाला ये बजट है। दूसरी बात यह कि इंफ्रा मजबूत करने पर पूरा जोर है। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट समाहित है। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आते रहेंगे, लेकिन इकोनॉमी जरूरी है। 5वीं बड़ी बात है कि कोरोना संकट से इकोनॉमी बाहर आ रही है। इस साल बजट में कैपेक्स बढ़ाए गए हैं। भारत में विदेशी निवेश लगातार आ रहे हैं। महामारी से उबरने वाला यह बजट है जो महामारी से उबारेगा। टैक्स सिस्टम में स्थिरता की कोशिश की गई है। एक्सपोर्ट क्षमता में इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी बातें हैं वित्त मंत्री की। न्यूज 18 से उन्होंने जो बातें कही वो सभी 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इस खास इंटरव्यू में क्या उन्होंने कहा, इंफ्रा मजबूत करने पर पूरे जोर की बात उन्होंने कही। 25 साल के ब्लूप्रिंट के तौर पर इस बजट को उन्होंने बताया। चुनाव के बारे में कहा कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इकोनॉमी जरूरी है कि हम मजबूत रहें। कोरोना संकट से इकोनॉमी बाहर आ रही है। इस साल बजट में कैपेक्स बढ़ाए गए हैं। तो ये सारी मोटी बड़ी बातें जो वित्त मंत्री ने खास तौर पर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान में कही, ये सारी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी 10 बातें जिनका जिक्र उन्होंने किया, खासकर बजट की वो बातें हैं जिनमें उत्साह नजर आएगा
और सबसे बड़ी बात, जो अहम लाइन है, बड़ी लाइन है कि महामारी से उबारने वाला यह बजट है और 25 साल का यह ब्लूप्रिंट सरकार ने इस बजट के माध्यम से तैयार किया है और कोरोना संकट से धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो बाहर आ रही है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर सरकार का विशेष फोकस है, जिसके कारण बजट का जो प्रारूप है कुछ इस तरीके का दिया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेतिया के नरकटियागंज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब तो इन अपराधियों ने डॉक्टरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खुलेआम डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। शिकारपुर के शिवगंज मोहल्ले से भी डॉक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ नकाबपोश अपराधी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं। जैसे ही डॉक्टर पर इन नकाबपोशों की नजर जाती है, उसे वो पीटने लगते हैं। डॉक्टर को बचाने पहुंचे क्लिनिक के 2 कर्मचारियों की भी जमकर पिटाई की गई है। वारदात की ये सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि रंगदारी वसूली को लेकर उन पर हमला किया गया, जिसमें 3 नामजद तो 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि इलाज के दौरान पैसों के विवाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार मारपीट की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि बुजुर्ग हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कन्हौली में तो बुजुर्ग मानो अपराधी बन बैठे हैं। पूर्व सरपंच होने के बावजूद गुंडई पर उतर आए हैं। बेबस महिला पर रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। अकेली महिला को अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। अब जब समाज का पूर्व सरपंच ही गुंडई पर उतर आया हो तो समाज के लोग भी दुब के रहे। किसी ने लाठी डंडों से पीट रही इस अकेली महिला को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई।